Part 1. The Story of Rahul. हिंदी to English. राहुल रोज सुबह 6 बजे उठता है. Rahul wakes up at 6 o'clock every morning. वह बिस्तर से उठता है और खिड़की के पर्दे खोलता है. He gets out of bed and opens the curtains. वह अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी पीकर करता है. He starts his day by drinking a glass of water. इसके बाद वह अपने दांत साफ करता है और अपना चेहरा धोता है. After that, he brushes his teeth and washes his face. वह अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 20 मिनट व्यायाम करता है. He exercises for 20 minutes to take care of his health. कभी-कभी वह पास के पार्क में टहलने भी जाता है. Sometimes, he also goes for a walk in the nearby park. घर वापस आने के बाद वह नहाता है और तरोताज़ा महसूस करता है. After coming back home, he takes a shower and feels refreshed. फिर वह साफ कपड़े पहनता है और काम के लिए तैयार होता है. Then he puts on clean clothes and gets ready for work. राहुल आमतौर पर अपना नाश्ता खुद तैयार करता है. राहुल usually prepares his own breakfast. वह आराम से बैठकर अपना स्वस्थ नाश्ता करता है. He sits down and enjoys his healthy breakfast. नाश्ते के बाद वह अपने दिन के महत्वपूर्ण काम लिखता है. After breakfast, he writes down the important tasks for the day. काम पर जाने से पहले वह अपना लैपटॉप, फोन, बटुआ और चाबियां जांचता है. Before leaving for work, he checks his laptop, phone, wallet, and keys. राहुल सुबह 8 बजे घर से निकलता है ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंच सके. Rahul leaves home at 8 o'clock so that he can reach the office on time. वह समय पर ऑफिस पहुंचता है और ऊर्जावान महसूस करता है. He reaches the office on time and feels energetic. एक अच्छी सुबह की दिनचर्या राहुल को अपने दिन की बेहतर शुरुआत करने में मदद करती है. A good morning routine helps Rahul start his day in a better way. Part 2. Vocabulary from the story. Part 3. Grammar from the story. Part 4. Practice. Now it's your turn. Do the exercise.